welcome back to my channel and welcome to another video. And this video is going to be like an experiment kind of video, and I'm like super excited for this video. So basically guys, you must have seen on the internet that there is always a debate going on that apple cider vinegar works or not, and does it help in weight loss and things like that. So in today's video we are going to try apple cider vinegar for 30 days, and I'll update about my weight every week. So we are going to do this experiment on me itself and we'll see if it works or not. And right now my weight is this. And by the way guys, for many people including me, I can't drink that tangy and yucky sour wala taste wala apple cider vinegar. Like I have tried it many times, but honestly I was never able to continue it because of its sour and tangy taste. मतलब मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था वो taste. So in today's video I'm going to have apple cider vinegar gummies, and this is from the brand Saturn, and this is actually a very delicious way to have your gummies. It is actually a very delicious way to take your daily dose of apple cider vinegar without the yucky sour taste. So yeah, without any further delay, let's directly begin with the video. So today is day 1 and I'm going to have these apple cider vinegar gummies from the brand Saturn, and I am like super excited. I loved it. It's so yum. I want to eat more, but I can't. It's one per day, one gummy per day, and I want to eat more. It's like so damn yum. And ये cranberry flavor में है. I think मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ये cranberry flavor में है and बहुत ज़्यादा अच्छा है. मतलब this is actually very easy to chew and it has no added sugar and additives, and you know this is literally very delicious. And as it is in the form of gummies, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप टॉफ़ी खा रहे हो. बिल्कुल वो एप्पल साइडर विनेगर वाला फील ही नहीं आता है. बहुत अच्छा टेस्टी टॉफ़ी वाला फील आ रहा था, एंड आई रियली लव दिस वन. लाइक ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आया. आई वाज लिटरली ट्राइंग टू ड्रिंक दैट यकी सार वाले एप्पल साइडर विनेगर which I was not able to drink, but it's so yummy. I think you should definitely check it out guys. I mean taste wise it's fabulous. Let's see if it works or not. मैं आपको पूरा अपडेट करने वाली हूँ इसी वीडियो में कि ये प्रोडक्ट वर्क करेगा भी या नहीं करेगा, but taste wise definitely 10 on 10. So guys, it's been a week and I quickly want to mention few things. Like I regularly go for a walk for like 30 minutes in the evening. This is not a new thing. I usually do it and I'm like doing it from like 2 months now. And also guys, I try to eat healthy food, but you know guys, it's a joke most of the times. I'll eat healthy for like 2 days and then again on the third day I'll eat something junk which will break my diet. So yeah, this is another thing, but yeah, I try to consume less sugar and less oily food, but you know it's like an on and off thing. मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है, so it's like that. So yeah, I wanted to mention these things because I am doing these things along with apple cider vinegar. So yeah, just putting it out there, not just taking apple cider vinegar and eating all the junk food. You have to be little in control if you are doing something and if you want to achieve certain weight. So yeah, you just don't have to do very, you know, high level exercises and go to gym and all of those things. So yeah, just letting you know these things because with apple cider vinegar I'm doing these things as well, which I'm doing it from like 2-3 months now. My current weight is this. I have definitely lost weight and will be like 1.1 kgs. It's like a lot, and I'm super happy that this is working and I'm quite excited for further weeks. So I already mentioned that I'm having ACV gummies from the brand Saturn, and I'm taking one gummy a day after my meals. Like I'm having it after my lunch. Also guys, I felt like after having these ACV gummies I am having better control over my diet. Like usually ना मेरे को evening cravings बहुत ज़्यादा होती थी, but after taking these gummies, after consuming these gummies, I am not really feeling hungry वो इवनिंग टाइम में, क्योंकि मोस्टली ना मंचिंग में इवनिंग टाइम में ही करती हूँ, एंड वो कंट्रोल हो जाए तो मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा वेट गेन कंट्रोल हो जाएगा, वेट गेन नहीं होगा. एंड आई डेफिनेटली थिंक दैट इट इज़ रिड्यूसिंग माई एपिटाइट, एंड दिस इज़ लिटरली अ वेरी नाइस थिंग. मतलब इवनिंग क्रेविंग्स में मोस्टली लोग ना इवनिंग में ही जंक खाते हैं एंड उसी की वजह से वेट गेन होता है, बट अगर इवनिंग क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाए तो वेट गेन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा.
So yeah, this is a great thing, and yeah, I will definitely update you next week now. So hi guys, week 2 into this experiment. So today I checked my weight on empty stomach, and by the way guys, I'm checking my weight on empty stomach only, so that to maintain consistency. I think this is the best way to maintain consistency. So before eating anything, I'll just check my weight like every week, and my weight is this one. I think I have lost 0.5 kg something. I know some people will be like, it's such a small number, but guys, I'm barely putting any efforts. I'm literally not doing any physical exercise, just doing regular walk. And also I think this is the best way to lose the weight. I feel like if you lose a lot of weight in a very short span of time, then it's not healthy, and उस तरीके से आप जल्दी वेट गेन भी करोगे और ज़्यादा आपको क्रेविंग्स भी होंगी. तो आई थिंक इट्स अ गुड नंबर. एंड ऑल्सो बाय द वे गाइज, लास्ट वीक ना मैं शादी में गई थी अपनी कज़िन की वेडिंग में, तो उस वजह से आई एट अ लॉट ऑफ फूड. तो उस वजह से दिस इज़ द नंबर. मैंने मतलब खाया था ऑयली फूड. यार वेडिंग्स में जाओगे तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मतलब स्वीट्स और ये सब चीज़ें हो ही जाती है नहीं चाहते हुए भी. ऑल्सो सैटन वीगन फ्रेंडली गमीज आर पैक्ड विद vitamins that provide essential nutrients to help improve metabolism and immunity, and this is rich in natural compounds. Also these gummies really help in eliminating toxins, and also it really improves digestive health. The unique blend of these gummies makes it a perfect addition to your routine for detoxing, cleansing, bloating relief, and curbing hunger pangs. Hi guys, week 3 into the experiment, and I'm literally loving these ACV gummies from the brand Saturn. काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कब मैं इसको खाऊंगी लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस. बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर है इसका. आई थिंक इट्स क्रैनबेरी फ्लेवर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. या इट्स क्रैनबेरी फ्लेवर ओनली. एंड बाय द वे एक बॉक्स में 30 ये गमीज आती हैं. सो इट्स पैक फॉर लाइक 1 month, एंड आई थिंक इट्स perfect. I mean, I'm really loving it and enjoying it. एंड ऑल्सो गाइज आई वुड से कि मेरा बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, लाइक मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो गया है, एंड आई एम लाइक feeling very active these days. I'm not even kidding. And also guys, these gummies are so good if you have diabetes. If you're like a diabetic patient, then also these gummies are very good. I'm not saying that I'm giving you some doctor advice or something, but yeah, इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा health benefits हैं. And also guys, this literally helps in balancing insulin spikes, and improves your gut health. So I think this is a really good ACV gummies, and plus फ्लेवर इसका इतना अच्छा है कि बस मन करता है कि खाओ इसको. And yeah, by the way, if I've not updated the weight, this is my weight right now. I know it's not a huge number, but as long as you are losing weight, it's obviously good. So yeah, this is the weight, and now I'll see you next week. So today is the last day of the experiment, and I'm like super happy that I completed this challenge successfully. Honestly, when I started this experiment, I was not sure that I'll be able to do this or not, but because of these apple cider vinegar gummies from the brand Saturn, इसका टेस्ट की वजह से आई वॉज एबल टू डू दिस चैलेंज. एंड ऑनेस्टली एवरी सिंगल डे आई वॉज लाइक सो मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड मेरे को हमेशा एक एक्साइटमेंट रहती थी कि मेरे को ये खाना है. ओके, मेरा लंच टाइम हो जाएगा, उसके बाद आई नीड टू हैव दिस, आई नीड टू कंज्यूम दिस. एंड वो मोटिवेशन मेरे को 1 month मेरे को पता भी नहीं चला कब चले गया. ये मेरा इस बॉक्स का लास्ट गमी बचा है, तो आई विल हैव इट. By the way guys, if I have not updated the weight, this is my current weight right now. So in 30 days I have lost approximately like 2.4 kgs of weight, which is like a very healthy number. I feel like ज़्यादा ऐसे वो 10 kgs लूज़ करना वो बिल्कुल ही वेग नंबर रहता है, एंड ऑनेस्टली वो सस्टेनेबल भी नहीं रहता है. जितना जल्दी आप वेट लूज़ करोगे उतना ही जल्दी वो गेन भी हो जाता है. एंड 2.4 kgs इज़ अ वेरी नाइस नंबर, एंड ऐसे लूज़ करोगे ना तो वो सस्टेनेबल भी रहता है और लंबे टाइम तक आप लोग उसको चला पाओगे. एंड टॉकिंग अबाउट दिस, मेरे को क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं. लाइक काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है. मैं जंक फूड काफ़ी हद तक मेरा रिड्यूस हो चुका है.
मैंने इसके दूसरे बॉक्स का ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये गमीज टेस्ट में, प्लस इट इज़ वर्किंग, दैट इज़ अनदर अमेजिंग डील। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। अगर आपको भी ये गमीज ट्राई करनी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट यार, दिस इज़ लाइक अमेजिंग प्रोडक्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू चेक इट आउट। लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड गाइज इफ यू like this video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon for more updates. Bye.